सेवा में जो संकल्प लेंगे, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड को कंस्पायर करेंगे उन्हें हकीकत बनाने में। मित्रों, ये स्टेटमेंट नहीं है, आज इस पावन धरती पर, आनंद आश्रम के स्वर्ग की धरती पर वो जीता जागता प्रूफ है। और देखिए, सारे सपने आज साकार हो रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में कितने सारे महानुभाव इकट्ठे हुए हैं, जाने पूरा ब्रह्मांड समा गया है इस आशीर्वाद का स्वरूप प्रेजेंट करने में। थैंक यू वेरी मच। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। Every auspicious thing must begin with a prayer to Almighty God. देवकी वसुदेव बाल। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना, करम पम हर दिल को तेरी याद आए तेरे बाद, इतना तो करता जा फिर दुनिया से दूर, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
I request Mr. K. Chabra ji to please have our chief guest, Mr. Vasuraj Arya, with a memento and a shawl, please. I request our Honorary Secretary of Anand Ashram, Sri Sanjeev Rathi ji, to honor the Commissioner of Police, Vadodara City, Sri Anupam Singh ji Galot. Ladies and gentlemen, the chairperson of the function, Her Highness Srimant Shubhangini Devi Raje Gaikwad is just arrived. We welcome you with applause. May I request each one of you to kindly welcome her. Now I request the trustee of the Anand Ashram, Sri Ramanbhai Bhadwaj, to kindly present the bouquet and memento to Rajmata. I now request all our distinguished guests on the stage, plus who are the trustees of the Anand Ashram, to please come on the stage for the lighting of the lamp. जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले, प्रेम प्रकाश मिले, प्रेम प्रकाश मिले, जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले, जीवन ज्योत जले। Ladies and gentlemen, now I would like to invite the managing trustee, and he is that person who is going to address us today as the part of the whole journey from 2012 till today, Mr. K.S. Chavra. आनंद आश्रम की इस स्वर्ग की पुण्य पावन धरती पर ईश्वर ने आप सभी को प्रेरित किया। संडे की सुबह चैलेंजिंग रास्ता ये नापते हुए आप सब यहाँ पहुँचे हैं, वो हमारा सौभाग्य, सेवा का सौभाग्य। आप सभी का सप्रेम नमस्कार और तहे दिल से वेलकम। हर हाइनेस श्रीमंत राजमाता सौभाग्यगी राजे गायकवाड़ जी, चेयरपर्सन ऑफ दिस प्रोग्राम, देवी जी, आपकी इस स्टेज पर और प्रोग्राम में प्रेजेंस से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है, वो हम अंदर फील कर पा रहे हैं। आपके और आपके परिवार ने जिस तरीके से वडोदरा को सींचा है और वडोदरा जो स्थिति में आज है, जो आगे बढ़ते जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस है कि आपके चरण कमल इस धरती पर आज पड़ने से वो ऊर्जा का, वो आशीर्वाद का, वो प्यार का हमें भी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट वासु जी, आप तो स्वयं वासु हैं। जहां 10 सालों तक ये आश्रम भवन क्रिएट करने के विचार बने रहे, बढ़ नहीं रहे थे आगे, तब उस वासु ने इन वासु जी को भेजा और इन वासु जी के 2 शब्द, भाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, रुके क्यों हो। वो वासु है, वो समझ गए अंदर की क्या बात थी और उन्होंने तुरंत ये कहा आगे बढ़ो, व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। और वासु जी, आपने वो दरवाजे आज खोल दिए। थैंक यू वेरी मच। एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी जिसको देखते ही, जिसका नाम लेते ही डायनेमिज्म आ जाता है, हमारे सीवी साहब
अनुपम जी गहलोत, हमें खुशी हो रही है कि आपकी एनर्जी हम यहाँ आपके प्रेजेंस के फॉर्म में फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे मुझे वो दिन याद है जब अपन एक ट्री प्लांटेशन के प्रोग्राम में मिले थे और मैंने कहा सर आपका आना ज़रूरी है, और तब आपने कहा था अगला प्रोग्राम होने दो, मैं आऊँगा, और आपने अपना वचन निभाया। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। बड़ौदा के जब जाने माने उद्योगपति, मैनेजमेंट गुरुज, ट्रेंड सेटर्स, सोशल एक्टिविस्ट के नाम लिए जाते हैं तो आप सभी जो प्रेजेंट हैं उनके नाम गर्व से लिए जाते हैं। आपने आज समय निकाला, मुझे खुशी है। आप में से प्रेजेंट हर शख्स हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है। आपने आकर अपना प्रेम दिया, अपने आशीर्वाद दिए। थैंक यू वेरी मच। It is very important for us to acknowledge the support of Indophils, Indobygeene and several of the other supporters जिनके नाम धीरे 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 करके एक एक आ रहे हैं और कईयों के नाम नहीं आ रहे। ये आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है, और इंडोफिल, इंडोबाइजीन, हम आभारी हैं आपके हर एम्प्लॉई के, हर वर्कर के, हर कस्टमर के, हर बायर के, जिनका ये सेवा का अंश सेवा के अंदर जुड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। यू आर अ बिग सपोर्ट एंड अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच। अब बेसिकली ये आज का ये मौका है क्या, ये आश्रम क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है, और ये दूसरे आश्रम से डिफरेंट कैसे है, वो कुछ शब्दों में, चंद लम्हों में मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि देश इकोनॉमिक ऊंचाइयों पर है। जीडीपी एंड ऑल दैट इज राइजिंग फास्ट। हम फिफ्थ इकोनॉमी से फोर्थ इकोनॉमी और सपने देख रहे हैं सेकंड इकोनॉमी, हाईएस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट 30-40 इयर्स। अब हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। एक तरफ जहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एट द सेम टाइम, नॉट लेटर ऑन, एट द सेम टाइम दूसरे सोशल चेंजेस आ रहे हैं समाज में जो हमारे लिए चिंता का विषय हैं, और हमारा ध्यान उन चेंजेस पर इस वक्त नहीं जा रहा। वो इतने धीमे धीमे आ रहे हैं और हम बहुत ही जल्दी उसका पेन, उसका पिंच महसूस करना शुरू करने वाले हैं अगर हमने नहीं किया तो। मित्रों, उस इकोनॉमिक ग्रोथ में अपने देश के जो युवान हैं, पर्टिकुलरली अपने देश की बात कर रहे हैं, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं, अपने देश के युवान जो इंस्पायर्ड हैं, एस्पायर्ड हैं, और वो अचीवर बनना चाहते हैं, पैसे कमा लेना चाहते हैं, शोहरत कमा लेना चाहते हैं, वो इंडिया को छोड़कर विदेश की तरफ उन्होंने राह पकड़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा देश का धन बाहर जा रहा है, और जब हमारे बच्चे उधर सेटल हो जाते हैं फिर उनकी लौट कर आने की इच्छा नहीं होती। बहुत ही रेयर परसेंटेज है कि किसी ने वापस मुड़ के देखा हो। मेरे मित्रों, मैं भी सीनियर सिटीजन हूं, भावुक हो रहा हूं। हमने सारा जीवन हमारे बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, पढ़ाई, उनके सुख साधन, उनके विदेश जाने के लिए उनकी पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए, पीएफ का फंड निकालना, लोन लेना, एजुकेशन लोन की गारंटीज देना, प्रॉपर्टीज गिरवी रखना, विभिन्न परिवारों में विभिन्न स्थितियों में ये सब प्रैक्टिकली हो रहा है। और मित्रों, देखते देखते वो सनसेट समय आ जाता है जिनकी हमारे सीनियर्स ने कभी इमेजिनेशन नहीं किया हो। वो परिवार जो तो इकोनॉमी से समृद्ध हैं, उन्हें तो सिर्फ प्यार की कमी लगती है, पर कई ऐसे परिवार हैं जहां गुजराती शब्द बीच में आएंगे, एक्सेप्ट कीजिएगा, रेवाना फाफा पड़ी जाए एवी स्थिति पण आवीने ऊभी थई जाए छे। तो ये तो हुई अपनी प्रॉब्लम, पर हम बात कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन की। अभी तक हम देखते आए हैं कि समाज में वृद्धाश्रम है, और एक वृद्धाश्रम आ गया। नो, हम वृद्धाश्रम शब्द को सब्सक्राइब नहीं करते आनंद आश्रम में। ये वो सीनियर्स हैं
जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया समाज के लिए, परिवार के लिए, वो आश्रम में जाएंगे? तब भी नहीं। तो व्यवस्था क्या खड़ी करनी? उन सीनियर सिटीजन्स के लिए आनंद आश्रम का ये हैप्पीनेस होम आ रहा है। जिस धरती पर आप इस वक्त बैठे हैं, ये वही धरती है और वो दिन सौभाग्य का आज है जब उसकी शुरुआत होने जा रही है। अब विशेषता ये होगी, हमारा जो आनंद आश्रम का 12 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके अंदर 15 सेवाएं हैं जिसमें हम आनंद आश्रम एक्सेल कर रहा है। सभी ट्रस्टीज़, वॉलंटियर्स को श्रेय जाता है। 14 ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे हम अभी रिपीट नहीं करेंगे। आपको इनविटेशन कार्ड में हमने सर्कुलेट किया है कौन कौन सी सेवाएं हैं। आज ये 15वीं सेवा शुरू होने जा रही है, जिसमें ईश्वर जी का साथ है। वो पहला प्रूफ आप सभी यहाँ मौजूद हैं। आज के इस दिन को छोड़कर इतनी दूर दूर, उससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? और आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद। अब हम लास्ट में अपील करना चाहेंगे हमारे कॉरपोरेट्स को। उनके पास CSR बजट ऑलरेडी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तो अपने CSR बजट्स डिप्लॉय करने हैं। तो हमारा उन सबसे प्रार्थना है, स्टडी करिए आनंद आश्रम प्रपोजल को, और यदि कहीं ऑन मेरिट्स आपको ये महसूस हो दिस इज अ प्रोजेक्ट वर्थ सपोर्टिंग, वी वुड रिक्वेस्ट प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। देयर आर मेनी फिलैंथ्रोपिस्ट्स इन द सोसाइटी। आज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, इसी हॉल में मौजूद हैं आए हुए मेहमान फ्रॉम US, UK, ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ, भारत से कई पार्ट्स के आप में मौजूद हैं। वी हैव friends, members coming from Uttarakhand, Himachal, from Chhattisgarh, Jaipur, Raipur, Indore and several other places. They have come here to encourage us and support us, and so have you done yourselves. अब coming to the end of this, मित्रों, लास्ट में मैं कहूँगा जीवन के ज़्यादातर पन्ने तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। सीनियर सिटीजन तो है ही ना। जीवन के ज़्यादातर पन्ने लिखे जा चुके हैं। जो कुछ बचे हैं, हे ईश्वर, हमसे वो सेवा करवा कि जब हम आंखें बंद करें तो हमें ये महसूस हो कि बाकी के पन्ने भी प्रेम से सेवा के नाम पर लिखे गए। हम ईश्वर के दरबार में जब वापस जाएं तो ऐसी कर्मों के बैंक बैलेंस लेकर हमें सब जाएं कि जहां ईश्वर स्वयं अपने सिंहासन से खड़े हो जाएं जब हमारा आगमन हो और कहें, आ मेरे लाल, तेरे को धरती पर भेजा था और तू सच में सेवा का कार्य अच्छी तरह से करके आया है। आप आए, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आनंद आश्रम का एक विशेष मेथोडोलॉजी है, कॉर्पोरेट टाइम से डू द बेस्ट दैट यू कैन एंड डू इट ऑलवेज द बेस्ट। एंड वी हैव द बेस्ट डिज़ाइनर, बिल्डिंग डिज़ाइनर दीपन गड़ा विदास, जिनके हाथ में आज का प्रोजेक्ट है, और वो इसके बाद दीपन भाई इस प्रोजेक्ट की विशेषताएं एक्सप्रेस करेंगे। और आफ्टर हिज प्रेजेंटेशन ये इसके अंदर कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ छिपी हुई है, तब आपके प्रेजेंटेशन के बाद इसको खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हु सपोर्टेड अस। थैंक यू। A small formalities to be done. I request Pradeep Bindeji to please come early on the stage. There is a book which was published last time, In Love with Humanity, authored by Mr. Pradeep Bindeji, and he has introduced a small pocket edition of this particular book. It doesn't have any graphics, but it contains the same thing. उसका विमोचन करना है राजमाता के हाथ से।
I request the Chartered Accountants of Anand Ashram, श्री मनीष बख्शी. छाबड़ा जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम चाहते हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट भी हो जाए. थैंक यू वेरी मच. शब्द से आपका स्वागत हो चुका है, पुष्प से आपका स्वागत हो चुका है. जगदीश भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो थोड़ा नंबर्स के साथ आपका स्वागत करके आगे बढ़ूंगा. जैसे जगदीश भाई ने बताया, छाबड़ा जी ने बताया, आज का दिन बहुत ही शुभ है. आज है 29 9 और 2 11 का अंक बहुत ही शुभ है, दैट एवरीबडी नोज. आज ये इनॉग्रेशन जो है फाउंडेशन स्टोन लेइंग अगस्त में होने वाला था, फिर सितंबर में होने वाला था, आज हो रहा है अक्टूबर में. 1010 जो ट्रस्टीज है छाबड़ा जी है, दे आर 1. बट आर्यभट्ट ने जब जीरो इन्वेंट किया था तब हमको पता नहीं था कि जीरो इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन 1. You all are the zero. You all are the support system. You all are the financial support system for the Chhabra ji, for the trust. That without zero, trustees 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 has no meaning. And when zero is added to any number, it multiplies 10 times. So you all are the zero for the trust, and so 10 is equally important. And we are in the year 2023. कब होगा फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कब होगा 21 में होगा, 22 में होगा, लेकिन 23 में हो रहा है. 2023 is equal to 7. 7 is always a lucky number. So today is a lucky day, lucky year, lucky month in which we are going to witness the foundation stone laying ceremony. And as a chartered accountant, I am associated with this Anand Ashram since so many years. And here, छाबड़ा जी ने बताया, आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने जैसा है तब करना. दैट इज व्हाट माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी हैव done audit and we assure that each and every contribution made to Anand Ashram, not for this 15th project, but all 14 projects, those who have contributed are the witness and are fully aware that each and every single rupee contributed to the Anand Ashram is so effectively used by the Anand Ashram for the purpose for which it is donated. And so is going to be the case with the 15th project Chhabra ji, because we have introduced the not only the internal audit system, but we have introduced the pre-audit system, which all entrepreneurs are fully aware. What is pre-audit all about? Pre-audit itself is a testimony of the money which you are going to donate to this trust, how they are going to be spent. So, Dipen ji, आपका जो टाइम प्लान है, आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, 3 है, लेकिन आज सब इंडस्ट्रियलिस्ट, आज सब फिलैंथ्रोपिस्ट, आज सब फाइनेंशियल सपोर्टर ऑफ द ट्रस्ट यहाँ मौजूद है. तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शायद आपको टाइमलाइन थोड़ी प्रिपोन करनी पड़ेगी. With this assurance, I would like to once again bow my hands to all the dignitaries on the dais and off the dais. Thank you very much. Thank you. Now I request our chief guest, another chief guest on the dais, Shri Anupam Singh Gehlot, to please kindly address. Sir, आपकी उपस्थिति से we feel totally secured about Anand Ashram, और हमें पूरी विश्वास है और श्रद्धा है कि आगे जाके भी आपका जो सहयोग है हमें मिलता रहेगा. आज जैसे बताया गया कि वर्षों की मेहनत और तपस्या के बाद आनंद आश्रम का 15वां अभिगम जो अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए है, उसका आज यहाँ पे खात मुहूर्त किया जाएगा. और ऐसे प्रसंग पे उपस्थित यहाँ आदरणीय राजमाता जी, आज के चीफ गेस्ट वासु जी, छाबड़ा जी की पूरी टीम, और आज के प्रोग्राम को जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सपोर्ट किया, ऐसे हमारे सारे सम्माननीय लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं. सर्वप्रथम मैं जो इससे पहले बड़ौदा पुलिस कमिश्नर था, तो उस समय छाबड़ा जी के आश्रम में, आनंद आश्रम में कभी मेरा जाना हुआ, तब से मेरा कांटेक्ट बना उनके साथ, और वो मैंने देखा कि कितना अच्छा किसके लिए काम किया जा रहा है आनंद आश्रम के द्वारा. तो तब से हम लोग जुड़े रहे. बीच में कोविड का भी आया, कोविड का पीरियड चलता रहा, लेकिन मैसेज का अपने आदान प्रदान होता रहा.
और अभी एक दिन जैसा बताया कि वृक्षारोपण के प्रोग्राम में मिले और बताया, तो मैंने उसी दिन सोचा कि 29 तारीख आज का दिन पहले से रिजर्व रखा था सुबह का टाइम कि मुझे आने आना इस प्रोग्राम के लिए। और खुशी इस बात की भी थी कि ये एरिया, मेरा कैरियर की स्टार्टिंग इसी एरिया से हुई थी। 98 में मैं पेटलाद डिवीज़न का असिस्टेंट एसपी था और ये भादरण आंकलाव पूरा एरिया, इस एरिया में हम लोग रात भर घूमते रहते थे। ये नदी किनारा है, मई सागर का कांठा बोलते थे, और यहाँ पे अलग ही एक इतना ब्यूटीफुल और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला ये जगह है। और ऐसी जगह पे इतना अच्छा काम होने जा रहा है तो ऑटोमेटिक, हम तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सिटीजन्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ये एक रिसोर्ट से कम नहीं रहेगा। और उनकी लाइफ के जो लगभग जब आएंगे तो उससे जितना होगा 10 साल और लाइफ उनकी बढ़ जाएगी ऐसे सुंदर एरिया में, ऐसे वाइब्रेंट एरिया में। ऐसे मैं ऊपर वाले से भी विनती करता हूँ। और जहाँ तक ये सीनियर सिटीजन्स की बात है, थोड़ा मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। अभी सरकार, सारी सरकारों में खास करके अपनी गुजरात सरकार की सबसे ज़्यादा एक जो जोर दिया जा रहा है पुलिसिंग पे, उसको जोड़ दिया गया सीनियर सिटीजन्स की, उनको केयर करना, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में। वो पुलिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हमारा डे टू डे का जो पुलिसिंग का एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया गया है कि हमारी एक अलग से टीम बनाई गई, जिसमें पहले अलग अलग पुलिस स्टेशन के लेवल पे होती थी, सीनियर सिटीजन्स का हम लोग रजिस्टर करते थे, उनके विजिट होती थी। लेकिन अभी आप सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते भी होंगे, एक सी टीम है, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी का मेन काम है कि सारे सीनियर सिटीजन्स की मुलाकात लेना, फ्रीक्वेंट मुलाकात लेना, उनसे फ़ोन पे बातें करते रहना, उनको क्या ज़रूरियात है उसको जितना हो सके कैटर करना। तो बड़ौदा शहर में 5250 सीनियर सिटीजन्स रजिस्टर्ड हैं हमारे पुलिस में। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, वो नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन ऐसे लोग हम लोगों ने देखा कि जो 5250 लोग हैं, उनको 20,000 लगभग बार हमने विज़िट किया एक साल में। मतलब एक को 3 बार 4 बार जाके ऑलमोस्ट 2 महीना 3 महीना विज़िट। फ़ोन से तो कांटेक्ट चलते ही रहता है। उसमें हम लोग उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको छोटी छोटी उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे किसी को बिजली का बिल जमा करना है, किसी का पानी कनेक्शन नहीं आ रहा, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, या किसी को अगल बगल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो सेल इतना अच्छा काम करता रहता है। जब एवरीडे हम लोग उसका एवरीडे जो हमारे पास आता है कि आज कितने विजिट्स हुई, क्या प्रॉब्लम उनकी थी, क्या वो फेस कर रहे हैं, तो वो देख के अभी लगता है कि अभी बहुत सारे, जैसा छाबरा साहब ने बताया, वो एक्सपीरियंस हम लोग का भी है कि ऐसे अपने बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे आते भी नहीं हैं। तो एक पिछले बार हम लोगों ने देखा, जो 3-4 साल पहले, तो एक ऐसा भी बहुत दुखद इंसिडेंट भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उस समय, कि बच्चों को कांटेक्ट किया गया, भाई तुम्हें आना है कि नहीं आना, तो वो बोलते थे मुझे अब यहाँ पे वेल सेट है, हमें नहीं आना। तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी कुछ लोगों ने गलत दृष्टि लगा के बैठे हुए थे कि इनके बाद बच्चे तो आने वाले नहीं, इनके बाद प्रॉपर्टी कैसे हम लोग जो है मिसचीव करके उनको जो है प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे। तो उसको भी लेके हम लोगों ने काफ़ी टीम, वो कंटिन्यूअस हम लोग उनको बोलते थे कि एनआरआईज को ऑब्जर्व करके उनको चीटिंग करने वाली एक गैंग भी यहाँ चलती है हर जगह, मतलब ऐसा नहीं अपना बड़ौदा, हर जगह। लेकिन उन गैंग के ऊपर भी हम लोगों ने काम करना चालू किया। और कभी कभी आप कुछ पेपर में पढ़े भी हो, कुछ ऐसा मैटर चला भी होगा, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री यही थी कि बच्चों को आइडेंटिफाई करने के भी कुछ लोग यहाँ काम करते हैं कि वो बच्चे जो वापस नहीं आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे वापस आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी है कि जो वहीं पे सेट हो गए हैं तो वो अपने कैरियर की वजह से नहीं आ पाते। तो उसके साथ करते करते धीमे धीमे आने वाले 3-4 साल में हम लोगों ने देखा अब उनकी केयर कैसे की जाए सीनियर सिटीजन्स की, क्योंकि अब बच्चे तो नहीं आने वाले, तो इनको कैसे संभाला जाए, तो उस दिशा में हम लोग चलते जा रहे हैं। फिर अहमदाबाद में भी हम लोगों ने देखा, जैसे छाबरा साहब की यहाँ पे फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है उनके लिए। अहमदाबाद में देखा कि हमारे कुछ दोस्तों ने, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बोला कि सर हमने एक आपको कुछ बिल्डिंग दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 2 BHK की है, लेकिन उसके नीचे आपकी सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ दिखाया। तो हमने पूछा भी किस लिए है, उन्होंने बताया सर सारे सीनियर सिटीजन्स अभी यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं, जो कि मतलब अच्छा खासा चलने फिरने वाले हैं, खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर उनको सारी चीज़, मेडिकल मिल जाए, ग्रॉसरी की चीज़ें मिल जाए, डे टू डे की जितनी भी चीज़ें उनको वहाँ मिल जाए, और आराम से एकदम क्लोज्ड गेटेड कम्युनिटी में अपना रहें। तो समय ऐसा आ रहा जो कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये छाबरा जी भी बोल रहे थे कि दिस द फैक्ट ऑफ
आवर सोसाइटी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे बिजी लाइफ जो चल रही है लोगों की, उसमें ये भी एक चीज़ें उसके जो ऑफशूट्स हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें चली रही हैं, देख ही रहे, आप लोग भी सब देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होंगे। लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ पे एक ये फैसिलिटीज़ डेवलप हो रही है जो है। और दूसरा बात, जगदीश भाई ने बोला ही ना, कहीं भगवान के पास जाने के बाद जो पूछे तो गेंगे फेफे ना करना पड़े, और स्पष्ट बता सके कि हमने ये किया, चाहे आपने डायरेक्टली किया, चाहे मोरल सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट किया, जैसे भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए भी। और वंस अगेन जो छाबड़ा साहब, मैं भी आया, आपने मुझे बुलाया इस अच्छे कामों में, तो 100% जो ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमारा भी, हमारी पुलिसिंग का भी एक विषय होता है कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें भी हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी चीज़ों को भी हम लोग जैसे भी हो सकता है उसे सपोर्ट करें, और फ्यूचर में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और वंस अगेन जो है, मेरा थोड़ा कल प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे, इसलिए जल्दी जाना था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ अभी रिहर्सल का अभी टाइम आ रहा है तो जल्दी जाना हुआ, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और वंस अगेन जो है, आपके इस अच्छे काम के लिए आपकी पूरी टीम को, और पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो हमारे डोनर्स हैं जिनके बिना सपोर्ट के ये आगे नहीं बढ़ सकता, उनको तो खास करके मैं थैंक्स बोलता हूँ। वासु जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम लेने में भी टाइम जाए, तो उसके लिए सभी को मैं खूब खूब जो आपका भी आभार इनके छाबड़ा साहब की तरफ से मानता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। May I request now Dipen Gadaji to kindly please be ready, because Dipen Gadaji always says that when heart strongly follows the right decisions. First of all, thank you, Anand Ashram. Bear with me with the languages, because normally we acquainted with the English and then I try to adopt Hindi in between and Gujarati also. This entire journey started long back when I came across Chabraji at the time of WordFest, and we were also doing certain work during that time under the umbrella of IIID, Indian Institute of Interior Designers, and we were part of many activity, and I understand that there was some fire in a person who has always, what is the program and what is the cause, he will be always there. And then I understood, and then I came across certain fact that he left his, all routine practice at the age of 50, and that is what I was trying since long, but I was not able to successful. So I really wanted to learn that path, that how one can go with the philanthropy and the make life meaningful. After a point when I met Chabraji in person and the team, entire team of Anand Ashram, and we also were churning the ideas that how we can, make it possible. So there are a lot of things which is either, either it is arguable, or the things where who will come so far and so on. So today also when traveling from Baroda to this, I understand that स्वर्ग का पाथ इतना आसान तो होता नहीं है. स्वर्ग में आने से पहले एक खूबसूरत रास्ते से गुजरना पड़ता है, and that's what the path we have charted, and then we all are here. I'm really happy to be part of this wonderful team. I wish that जो हमेशा बोलते हैं ना, प्रभु इतनी ताकत दे हमें सबको कि हम वो सपना साकार कर पाए कि जहाँ पे एक खूबसूरत सा स्वर्ग हमारे सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध हो. And with that ideology, I will try to put few things, which is the journey of this Anand Ashram, how we have thought of, and then which way we have went on. So when it has been coming with the name of Swarg right from beginning, so Swarg में हमेशा टीम एंड छाबरा जी बोलते थे आप धरती पे एक स्वर्ग बनाइए. Now, yeah, wonderful. So Swarg is something which is not needed to be done with our imagination of Swarg, like the structure and the kind of ornate and अप्सराएं हो वहाँ पे, ये वो, ये हमारा स्वर्ग है जो हमारी मिट्टी से बना हुआ है. And this Swarg is something where we have started with the concept of earth, because earth is the ultimately जहाँ से हम आए वहाँ से जाना है. तो it's a journey where it is unveiling to the beautiful second inning of all of us, and that's what we have tried. So when we talk about
this Swarg, and when we were looking at the happiness, what is going to happen, and what is the certain level of aspiration with everyone, our other second inning, and then getting uh, uh, combination of many friends. You're making new friends here, and your uh, uh, your this age is something which is even better than what we have already lived. So a lot of activity which has been planned, and that has been the always attention of what we can do the best. And that is what we were looking at, that what we can do the best for this senior citizens, because after certain years we are also part of that senior citizen uh, 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 combination. So lot of different activities we were actually looking at, that what best we can do. And all these activities are such which is always giving us one next level of happiness, and that's what we are looking forward. So these are few images to introduce this beautiful Swarg, we can say, and lot of crazy activities and lot of things which we can definitely look forward to. And yeah, that's what is this is what we want to create a wonders at the land of Baroda. So first, if I can say the mood board, that's how the architect works, and then we always imagine that what kind of Swarg or what kind of that entire world we are going to create for the people. And that's what certain areas where we were looking forward, that what is the beautiful areas what we can carved out with a different level of a working pattern, which is not only a body, but it is the nature which has been embedded and which has been woven within all these areas. The energy of all our cosmic energy, sunlight, wind, nature, the green aspects, and everything has to be well catered. And what beautifully we can do. It is not only a body which creates wonders, but it's a soul which has been poured by the people, poured by the nature, and it's that's what we can do. So this is what the site analysis is. This is what our beautiful site is, located at Bamangam, near the Mahi Nadi river, and very soon we are expecting one check dam ahead of this, and then we are hoping that this entire river will be full all the time. Right now it is also full at the time of Poonam and certain areas where the uh, high tides are there. So it's a beautiful piece of land where the land approaches where we entered, and land is having a direction of northeast southwest, the way it has been shown in the presentation. And the proposed site entry has been decided based on the accessibility, parking, and at the same time looking for certain aspect of vastu as well, because tomorrow we do not miss out on anything. We are not superstitious on that aspect, but at the same time we wanted to make this very scientific and beautifully. So this is the view of river valley, where we can elevate certain structure and have a beautiful view. The sun path is also a crucial role in any architectural development, and this is what the land when we have first approached on the site. And the conceptual development has been started in a way that this is the pocket of land what we have, and this is the pocket and the bubble diagram what we have thought of for the different activities and different structures to be developed. The site entry is in northeast corner and in the narrower part of the area where the parking has been well placed. And this is the feature of the ashram where we are hoping to create. We are actually planned and visualized the walls which is made out of remmed earth. Remmed earth is made from the land and the soil which is there on the site and the composition, and this is what the remmed earth wall along with a lot of greenscape, because greenscape is something which is creating better structure than what we men create. And this is the entrance plaza. Also we wanted to create some registration or some character of to the entire campus, whereas this rendered huge
monumental wall is actually covering that entire area from the front and creating one level of curiosity to the people who are entering. And there's a monumental screen wall made out of rammed earth. The block, residential block, has been planned towards the southwest side of the plot, but that has been then divided into two masses. And masses also is not squarer and blocker, but then that has been, created with a beautiful courtyard, which the entire area, entire ideology came with the word humph. Now humph is a Gujarati word, is alingan. Alingan is something where people are hugging and then they are together in their entire day-to-day journey. So these are how the block has been carved out, with pocketing and with the area where the air ventilations, the cross ventilation, everything has been taken care of. So the reducing built mass. Then this is the administration block, covering a lot of activities in the front. Uh, this is the path to enter to the main residential block, the semi-open connectivity place. At the same time, this is the kitchen area, the pantry, kitchen area, and multi-purpose hall on the first floor. And number one is the Dadi's kitchen. Dadi's kitchen is an idea came with the discussion that what if our senior citizen people, they cook food, they serve to the food, and the idea is every Friday, Saturday, and Sunday the kitchen is open for everyone, and people from Baroda or all across side, I mean all surrounding, they will visit to this ashram. They can have beautiful food made out of our expert hand of dadis and dadas, and they can serve, they can have this beautiful activity, and they can make their life so worthwhile, engaging themselves. So it's the canteen and the dadi's kitchen. These are few kutis has been planned for the people who really wanted to lease out for longer period of time, and they being part of they can take ownership as a terms of lease later on. So these are few kutis has been planned out, independent kutis. These are few amphitheater and other areas, the multi-purpose hall, semi-open activity area, the pathways and all such areas. The definitely the open amphitheater outside, the landscaping, and the staff quarter and the doctor's quarter. So this is ultimately entire a journey of how we have actually conceived entire planning. The wish list has been given by Anand Ashram team, and then we have tried to follow almost each and every point as much as possible. Can't go much into detail, but definitely there are fantastic analysis been done by the team, and they have been given to us. We have tried to put as much as possible. The design journey is something where you must have seen this the semi plan in your invitation card. It is a refined plan where all the details is been turned out and covered as much detailed as possible. I'll definitely show you in detail the presentation where as they go on. But this is the administration block which is leading to the residential block, along with lot of greens around and the multi-purpose activities. These are the kutis. There are two plan of kutis. One we have already presented earlier, but we want that to be little more enhanced. So we have actually made it with the similar built mass. We have actually made it little bigger, so that the people who are living there, they can have little more, their ownership, and then it's more detailed and enhanced with a similar size of details. So this is also a surprise to the team, because this is we have just done few days back. We keep working on it, and we wanted this to be one of the best. These are the residential units where few units are having suite kind of units, where there is a area where the bedroom area is there and the suite area is there, and there are few on the upper floor where entire one room is serving all the purpose, and there are a few more areas where people can live a little more in togetherness. And this is the area for the kitchen, utility, and pantry area with the Dadi's kitchen. Entire analysis has been done with very thorough, planning and everything. So definitely, plan is something where it needs to be go more into detail, and when people
definitely explore those ideas. It's too short time to go in the detail of the plan, but definitely the visual connect where people can connect this entire area, that how is this going to happen. And these are few visual connect. The moment you enter in the parking area, one beautiful rammed earth wall is welcoming to the people, and there are certain beautiful ideologies, or the the artwork has been crafted on the wall, which is showing the purpose. But this is the area where there is no formal gate kind of thing, but these are the unfolding of rammed earth. And practically this unfolding is merging with the nature. Our major idea is to go with the best of the landscaping, which is ultimately taken over by the built mass, and that is what is the overall ideology is. So the idea is to charter the path towards the main building, even without even seeing it, that how you are entering to the womb, and then you are actually ending up with the second inning, or the way you are going on. So beautiful sculpture has been planned, and welcoming wall with a nice greenscape, and this is how the wall is welcoming to you, covering that entire beauty or the curious plan and entire activity behind this beautiful rammed earth wall. So rammed earth wall, the beauty of rammed earth wall is something which is uneven and which is not in control, and that's how the nature is playing a major role. So these are few landscaping areas where, when we are looking towards the kitchen area and the pantry area, the upper floor is a multi-purpose area, and the Dadi's kitchen, and definitely Dadi's kitchen has been planned with a view of river. So the kutir area on the one side, and these are the areas we have actually planned not to have any step till the level people are entering to the entire area. So major, there is no steps. So major these things is something where things are going a little more in wide, and that's how we are going towards a beautiful inside of that structure. And also we have thought of enveloping the brick in terms of creating the warmness and the earthness and different areas. These are the residential block with the filleted edges, also not sharpened and been curated. The corner junctions are creating well ventilated areas and facades. These are the real pulp of the buildings, where the residential block is having a beautiful 50-foot long courtyard, where people can get together when they are out of their rooms, and they enjoy the nature with very nice hugging kind of structure. This is the kitchen and the Dadi's kitchen, and these are the kind of ghat where people can look for the evening sunset and sunrise both, because it's a cross direction, and they can look at the river also. And this was the aerial view of this entire structure from both the sides. So there are few internal also we have created. I know the time is very short with everyone, but wait a minute, this is the pulp. So these are few interior views. I'm clearly going through a little faster. These are the kutir views. These are few residential block which we have planned for. So one can understand that how we are actually thinking in a detail that what it is going to be happened. And this is not just a mercy, but this is what is the privilege to the senior citizens. Let's experience this life journey.
Thank you. Just I'm concluding that this is a mammoth task and this is what we are expecting to create wonders on the earth. So it's everyone's support is definitely required. Thanks a lot for giving us a chance to work on this beautiful project. Thank you. हमारी सफ़र में अगर कोई हम सफ़र हमारे साथ रहा है तो वो एक है, वो हमारे वासुराज आर्या जी है। और कहते हैं कि समय की धारा में उम्र बह जाती है, जो घड़ी जी लेंगे वही यादगार बन जानी है। तो वी हैव विथ अस our the distinguished chief guest of this particular function, and I request Vasuraj Aryaji to please address the gathering and oblige. I don't know how to address you people, but let me say hello to our friend who happens to be the best friend of our promoter, Dr. Beena Modi. So I'm very obliged that she's here and she is gracing this occasion. However, there are two things which has come out today. One is that it was never my idea to do anything. It was Dr. Beena Modi's idea. Just 3 days before I met Chabraji, she told me that we should do something with the senior citizens. She did. And I said, okay, that's a commercial project. Let's not get into that. She said, no, company must give money. All the money should go to all these kind of ventures. So and 3 days later, Mr. Dakshesh Mankad, who was with us, he came up with this idea 3 days later, exactly 3 days later, after she told me that we should invest here. He comes up to me, and in a split second, I just said, yes, we will. Am I wrong? We said that. And then in 3 days' time, I was sitting in Baroda with Mr. Chabra and his lovely team. Of course, I have one weakness, and I said I want to have some tea. They never expected me to ask for tea. So somehow they arranged tea for me, and it was the best thing. So two things are very clear. One is, I don't agree with Mr. Chabra when he said, "Us Vasu ne, is Vasu ko bheja hai."
वो भी इनविजिबल है, मैं भी इनविजिबल रहना चाहता हूँ. We don't want to be visible. Visible is going to be Anand Ashram. Visible is going to be life. I think my esteemed friend said, let's enjoy the journey. My other friend said, this could be a resort. I think this is a destiny. All the journey that you have covered is going to manifest here. It's one of the best projects I have seen. And our promoter, as we speak, is right now in the plane traveling, but she inquired about this last night at 12:30. I was fast asleep and she's asking me, what's happening to this? I said, tomorrow your friend is going to lay foundation for this. So we are on track. And rest assured, this will be delivered. So it almost sounds like it's her baby now. It almost sounds Dr. Beena Modi is sitting amongst us and she's telling us, go ahead, don't worry, we are there. So that's one thing you should take it for granted, that Dr. Beena Modi is also changing the whole dynamics and coming up with the Modi Foundation. So this will be a part of Modi Foundation, just not Indophil or Indo-Biogen. At the same time, she has assured me that she will come here in March to see what's happening. Basically, she wants to spend time with her friend. She wants to spend time with her friend, but when she realized that this is so close to Baroda, she says, okay, I'm going to come here and see this. So we have a very short notice. We have a very short time, March. So by March, we must do something, which means as she lays the foundation today, we should start work tomorrow. This is a wonderful project. I agree with only one thing, that this is a sunset project. As my friend said, that a lot of youngsters want to live here. I agree with the youngsters want to live because this is a young energy, which means all of you are not really retired anymore. There's a young energy which is going to come here. And somebody also said this is a second innings. I think it's the first inning of the second inning. All you have to do is be here. I mean, a lot of people think the architect is building something, the trees are there. No, it's you who's going to build it. So please give all your energies here. We're not talking about the money here. We are really talking about good energies, your goodwill. Because that's what we are. Dr. Modi told me something very interesting and I must share with you. She said, how much money do they need? I said, I don't know. She says, so don't let it be transactional. Just don't say, here's a check and we are done. She said, participate in this. So my team has been called here to give you all the help that you need. And needless to say, I'm there for you. I'm certainly going to be there. Because we don't want to be transactional. We are a relationship company. We get into relationship. We don't give our product to the farmers and say, okay, here's it. We care for them. That's why we call ourselves a crop care company. And when we do that, we don't consider ourselves anywhere less than the army people, because we want to protect the farmers. We want to take care of them. So therefore, for us, it's not the money. We are there for you. We will see to that somebody or the other is always here. So please take it from us. And thank you for inviting me. Indophil, Indo-Biogen, Modi Foundation, Dr. Beena Modi will always be obliged for this. Thank you. Thank you very much, Vasuraji. Friends, we have with us our another co-chair, the chairperson of this particular function is Her Highness Srimant Rajmata Shubhangini Raje Gaikwad. I request her for her blessings. May I request Rajmata to kindly bless this particular project. नमस्कार आज सब उपस्थित लोगों को, to the trustees of Anand Ashram, the dignitaries on the dais, of the dais, my friend Shri Vasuji, who's here representing the Modi company, and all who are involved
with conceptualizing and putting into a real form this whole project of Anand Ashram, which has been named, rightfully named Swarg. यहाँ हम लोग ये दिया लगा के, ज्योति लगा के शुरू किया, तो मैं 2-3 उसी के बारे में एक श्लोक बोल देती हूँ. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मा अमृतगमय. ओम शांति. ये एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बन रहा है जो अमृत काल के लोगों के लिए अमृत समय में विचार किया हुआ है. तो मैं पहले तो बहुत बधाई देती हूँ छाबड़ा जी को कि आपने ये सोचा और इसका विजन प्लान किया और अब ये बनने जा रहा है. इट्स कमिंग टुगेदर वेरी ब्यूटिफुली. I congratulate the architect also, Shri Dipin Gada, for giving us a very beautiful presentation on what we expect it will be. I'm glad that he has taken into consideration, जो उन्होंने कहा, we think of मट्टी से निकलते हैं और मट्टी में ही जाना है, तो we have to give credit to the Mother Earth for whatever there is. And I'm sure he has taken into account all the environmental conditions to make it this really a green project, which will be beneficial to humanity, beneficial to nature, and beneficial in every way to the world. So I give my best wishes. This project is backed by no other than a dynamic person like Dr. Beena Modi. Dr. Beena Modi and myself go a long way back, I think more than 50 years ago. We have a friendship which is beyond one can express as friends also. And that, I know her over the years to be a determined person with grit and strength. And if you have a backing of such a dynamic person with you for this project, I don't think you have anything to fear, because the support of the Modi Foundation and Dr. Beena Modi is going to be very, very give strength to your project. So I am so happy that you thought of me and मुझे आज आपने याद करके यहाँ बुलाया. वडोदरा में जो भी पॉजिटिव काम हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है, उसमें हमारा परिवार हमेशा we have been supportive और उसमें रहे हैं. तो इसी नाते मैं आज आपके साथ खड़ी हूँ यहाँ. तो मेरे शुभेच्छा सबके साथ है. My best wishes are there for the success which is definite for this program and this project. And my best wishes are there who are all involved in contributing, in making this something beautiful that will come on the outskirts of Baroda. It will really help. It is a need of the hour, as it was expressed earlier. और हमारे senior citizens, of which I am also a part of that, need to think and need to have एक जगह जहाँ सुंदर जगह जहाँ सब लोग मिलजुल के रह सकते हैं. तो इसी भावना के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, मेरी शुभेच्छा देती हूँ, and good wishes for the success of this project. सर्वे भवन्तु निरामय, सर्वे भवन्तु सुखिनम. यही प्रार्थना है भगवान से, और आप लोग हमेशा खुश रहें और यहाँ अच्छी तरह से
ये प्रोजेक्ट का सक्सेस देख सके, यही हमारी आशा रहेगी। धन्यवाद। Thank you very much, Raj Mataji, for your blessings, and I am sure with your blessings, things are going to take shape very early, very fast. એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે મને બીજાના વિચાર દે. With this, we are going to come to the last fact of this program. कहते हैं कि संसार में कौमवाद है, जातिवाद है, साम्यवाद है, लेकिन सबसे ऊपर एक धन्यवाद है. तो मैं विनती करता हूँ हमारे ऑनररी सेक्रेटरी संजीव रति जी को for a formal vote of thanks. After this, we have the foundation stone laying ceremony. We have two pits. One is a very small pit of about 3 feet, so usually you can go and put thing. And second one is a deeper one. So we just say that you can, all of you can go, as you said, each one. And this particular model which we are now going to unveil it, you kindly have a look at it, and I am sure you will be very happy. And thereafter, we have prasadam. And I request each one of you to kindly join for the prasadam also. And I, the master of ceremony of today's Jagdish Thakkar, sign off with this thing, and thank you so much for being with us in the whole program. Thank you so much. इजाज़त मिल गई धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद जो है वो एक शिष्टाचार है, लेकिन उसके अलावा ये एक आध्यात्मिक ज़रूरत है हम लोगों की कि हम जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे विजिटर्स हैं, उन सबको हम धन्यवाद कहें। तो सबसे पहला धन्यवाद उस ईश्वर को जिन्होंने आप सबको ये यहाँ आने की प्रेरणा दी। छाबड़ा जी को उन्होंने ये ड्रीम दिया कि स्वर्ग का निर्माण किया जाए, और ये पूरा जो एक ड्रीम है हम सबका ड्रीम बन गया। उसके लिए ईश्वर जी को धन्यवाद। गुरु जी श्री जी नारायणन जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमको इतने समय से हमको गाइड करते रहे हैं। उन्होंने हर जगह पे हमारा मार्गदर्शन किया, उनका बिल्कुल दिल से धन्यवाद। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। आज बड़ी खुशी का दिन है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि महामहिम राजमाता शुभांगिनी जी आज यहाँ प्रस्तुत हैं, और उन्होंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को आशीर्वाद दिया, हम सबको पूरे वॉलंटियर्स को आशीर्वाद दिया। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी उनका आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहेगा, और हम इस प्रोजेक्ट को और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को हम आगे अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। श्री वासुराज जी आर्य, उन्होंने आज बहुत कुछ कह दिया। अब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद भी ठीक से कर पाऊँ। तो वो आए और उन्होंने अपना समय दिया यहाँ पे, उनका दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोग हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं यहाँ पे, जिनको एक एक करके नाम लेके सबका धन्यवाद करना बहुत मुश्किल होगा। समय की कमी है, हम आगे प्रोग्राम में बढ़ना है। तो आप सबका, जितने भी हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं, सभी विशिष्ट अतिथि हैं, जितने भी लोग आए हैं, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे और हमारा हौसला बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। दीपन गड़ा जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आपको सबको दिखाया, और उम्मीद है कि हम अभी कुछ समय में यहाँ पे उसका मॉडल भी देखेंगे, और उसके लिए उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। हमारी पूरे वॉलंटियर टीम, हमारे जितने भी स्वयंसेवक हैं, बहुत सारे हैं, हम सब उनमें एक हैं, तो उनको सबको नाम नहीं लेते हुए उन सब का धन्यवाद। और कुछ लोग हैं जैसे हमारे जगदीश भाई हैं, जगदीश भाई ने बहुत अच्छे से स्टेज को संभाला, मास्टर ऑफ सेरेमनी रहे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही उनको कहा कि वो तो मास्टर ऑफ सेरेमनी के भी मास्टर हो गए हैं, तो उनसे धन्यवाद कि उन्होंने दिया, सब समय दिया, अपना पूरी तैयारी की। हमारे पूरे डोनर्स जितने भी, जिन्होंने भी शुरू से लेके आज तक हर एक्टिविटी में हम लोगों को सपोर्ट किया, आगे भी अभी भी सपोर्ट जारी है, उन सब को धन्यवाद कि उनके आशीर्वाद से, उनके हौसले से हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास धन्यवाद हमारे नीलेश भाई
और हेमा राय दादा जी जिन्होंने यहाँ पे अलग से, जयेश पांडे जी, सुनील जीवन जी, ज्योति गिल जी, अभी शायद मैं देख नहीं रहा हूँ उनको, लेकिन उन्होंने बहुत सारा पीछे से समय दिया है। नायोमी पारक जी, दीपेश भाई जो आज हम सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन भाई परमार जिन्होंने शुरू से इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को सहायता दी है, उनका धन्यवाद। फराज खाना के लिए लाला भाई, नदीम भाई श्यामवाला, कैटरर्स मैसर स्पाइस क्राफ्ट जो रुचिर पटेल जी हैं। एम्बुलेंस के लिए हम लोगों को ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि इस प्रोजेक्ट की खासियत, मतलब देखते हुए अहमियत को, सब लोग हम लोगों ने पिट भी तैयार की है, तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं महसूस होगी, लेकिन फिर भी सोचा कि एक एम्बुलेंस रहनी चाहिए यहाँ पे। उसके लिए क्रॉस रोड हॉस्पिटल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी तरफ से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पे की। आप सभी को जिन्होंने भी हमारी यहाँ पे सहायता की, उनको दिल से धन्यवाद। बामनगाम की पंचायत, यहाँ के पंच, सरपंच, यहाँ की जनता जितने भी हैं, उन्होंने शुरू से लेके अभी तक हम लोगों को सहयोग दिया है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। बहुत लंबी लाइन है, मेरे को लगता है कि सबके नहीं कहते हुए आज मैं आप सबको, जिन्होंने भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, किसी तरह से भी हम लोगों को हेल्प किया है, आप सबका, हम पूरे आश्रम के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। सपनों का स्वर इस मॉडल के रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके सामने। आइए अपन सब मिलकर इसको अपनी धरती पर, इसी परम भूमि पर सच का उतारना। थैंक यू वेरी मच। भजन्नः पशुभ्यः या श्री स्वयं सुकृतिनां भवन्ति